So good evening, everybody. Can everyone listen my voice? Can everybody can listen me? सभी को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Yeah. Okay. So first, let me share my screen. And here you are. So, as I said, that in each class there will be a surprise program. A lot many people has not joined, but okay, surprise should not wait. Okay. So first, I will start from there and then I will go for the today's agenda. Okay, just a minute. A lot of files open. Okay, my software, sir. So let me check one program. I hope that everybody has its mobile phone around. मोबाइल फोन है ना आपका आपके पास में? हाँ ठीक है, एक मिनट, कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. It has got popped up. So ये यार एक मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है. Not going deep into it. So just see how many line of code are there. 1 2 3 1 2 3. What will happen? So I have a link here. What is there? It is the surprise. It is HTTP. Okay, YouTube. One video is there. Okay, I'm running the code. Yeah, code has run and it has created a PNG. Okay, a PNG file is created in my current directory. Which directory I am right now? I can check it. It is PWD. So I'm Python course and batch 22 I am. Okay, so I will open this folder. It is batch 24. And what is the name of the file? Just check. The name of file is the qr.png. Okay, this file is there. Yes, my qr.png file is here. In my computer, it is showing something like that, but it is, we can open it with the Chrome. So people who have the mobile and having QR code software can check it. What is there? मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखो उसमें क्या है, ठीक है? And tell me what is there. चैट में लिख के बताना क्या आ रहा है, ठीक है? Just 3 line of code. Huh? I'm waiting. Just check कीजिए क्या है. Yeah, got it. It is Avatar's trailer. Way of water. Okay. So what we have done with Python, write less, do more. Okay. There are lots of wonderful libraries are there, and you can do a lot of things in such a convenient and fast way. Okay. So let's begin with today's agenda. ठीक है, मैं लास्ट में एक बार फिर से ओपन कर दूंगा, है ना, जो लोग जिनका मिस करेगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट्स आवर एजेंडा हियर टुडे? इट इज day 3. Yesterday there was no class, so today we are going to start control structure. We're talking about different types of control structures. Okay, so control structure क्या होता है? कंट्रोल स्ट्रक्चर कि जैसे आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं,
या पहले हमने जो कुछ प्रोग्राम बनाया है ना, तो कैसे हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसे चला, प्रोग्राम का फ्लो कैसे चला। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है। अ, एक मिनट, मुझे एक सॉफ्टवेयर ऑन कर लेने दीजिए। I generally use a lot of freewares. नहीं होगा तो मैं पेंट ब्रश में काम कर लूँगा। इट इज़ एक्चुअली ये स्क्रीन के बैंड चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सो व्हाट हैपेंस कि जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जैसे आपने क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट करने के बाद यू विल टेक द इनपुट्स। आप इनपुट्स लेंगे, ठीक है, पी आर टी लेंगे। देन यू विल डूइंग सम कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करेंगे। एंड देन आपने क्या करना है, आप उसका आउटपुट देंगे एंड स्टॉप हो जाएगा। सो योर प्रोग्राम इज फ्लोइंग डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, नो, सीधे रास्ते चल रहा है, नो लेफ्ट राइट नीडेड। ओके, सो ओके ओके फाइन। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन अब आ रहा है कि थोड़ा सा हमें क्या करना है। ऐसी सिचुएशन है कि व्हेन यू कमिंग हियर, यू हैव टेकन योर इनपुट, और बिफोर दैट आल्सो यू हैव टू मेक सम डिसीजन। ठीक है, कि सपोज आपने एक नंबर लिया, ठीक है, यू वांट टू चेक वेदर इट इज इवन नंबर और ऑड। तो आप चेकिंग कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। हाँ, आप चेक कर रहे हैं कि इफ थ्री डिविजिबल बाय टू, ठीक है, it will have two output, yes or no. On the basis of yes, you will be outputting something, आप कुछ अलग print करेंगे, no क्या basis पर आप कुछ और करेंगे। So what is happening here? So your control is not flowing like that, your control is taking some other route based on the certain condition। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल स्ट्रक्चर का पहला टाइप। और भी डिफरेंट टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सम टाइम यू हैव टू रिपीट सम वर्क। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड द कंट्रोल फ्लो आल्सो, क्योंकि वो प्रोग्राम के फ्लो को डिफाइन करता है। ये प्रोग्राम का कैसा फ्लो है, बिल्कुल सीधा सा फ्लो है। यहाँ पर जो प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं, इसका फ्लो जो है डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। ठीक है, तो कंडीशन का चेक होते हैं और उसके बेसिस पर आपके प्रोग्राम का पाथ चेक होता है कि हाउ थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड एंड दोस थिंग्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे लैंग्वेज में मिलता है। तो व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिफाइन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, या मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सारे लैंग्वेज का। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाइथन ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लैंग्वेज। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, लूपिंग, ब्रांचिंग एंड जंपिंग। ठीक है, सो आज हम लोग बात करेंगे इसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग जैसा नाम बता रहा है, ब्रांचिंग हो रहा है ना। आपने यहाँ देखा कि रूट यहाँ आया, देर आर टू ब्रांच, आइदर योर execution flow will go this way or that way। okay, the in complicated जो बड़े प्रोग्राम आप लिखेंगे तो इस तरह के ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके कोड के अंदर होंगे। देयर विल नॉट one single control statement, there will be many different type of control statement based on the complexity of your program that you are writing। okay, so what are the different type of control structures, looping, branching and jumping। ठीक है, looping repetition वाली होती है, when you have to repeat some statement again and again। ठीक है, तो वो looping होती है जो हम लोग next day करेंगे। we will talking about the different looping structure in detail। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट की। तो पाइथन में तीन ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स ऑफ
और एलिफ होते हैं, ये 3 होता है। हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ का मतलब आपने समझ लिया कि इफ क्या करते, क्यों यूज किया जाता है। डोंट लुक एट दैट, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, पहले सिंपल वर्क करते हैं, ठीक है। सो व्हाई नॉट यू स्टार्ट, ठीक है। मैं सिंटेक्स पहले दिखा दे रहा हूँ। सिंटेक्स कैसा होता है, इफ देन कंडीशन एल्स देन कंडीशन। सो ये इफ चीज किस क्या शो करता है, या किस क्या इसके नीचे आएगा, और एल्स के बाद कौन सा कोड आएगा, जस्ट कमिंग बैक। सो इफ के अंदर जो होगा वो होगा यस वाला कंडीशन, और एल्स के अंदर कौन सा होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो ट्रू वाला कंडीशन एंड फॉल्स वाला कंडीशन। तो हम एक कंडीशन लिखेंगे, और वो कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा चीज सिंटेक्स में क्या ध्यान देना है, पाइथन का अपना सिंटेक्स है कि कंडीशन लिखने के बाद आपने एक कोलोन लगाना है। ओके, सो व्हाई नॉट वी राइट सम कोड। कोड लिखते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक। आई एम यूजिंग, आई रिपीटेड, मैं यूज कर रहा हूँ ये एनाकोंडा, क्योंकि आप जो भी काम करें पिछला कोड हमारे पास हैंडी रहे, है ना, दैट इज व्हाई आई यूज इट। अदरवाइज फॉर राइटिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस the PyCharm is better, or there are other IDs like काफी लोग VS Code यूज करते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग इट बिकॉज जस्ट आई वांट टू शो ऑल द कोड्स, जो पिछले चीजें वो तुरंत तुरंत आपके सामने जो है दिखता रहे, है ना, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इट। बट यस, मशीन लर्निंग वगैरह में दैट एनाकोंडा इज यूज्ड। तो चलो मैं कोड लिख रहा हूँ। इफ सी आई जस्ट वांट ए नंबर एंड जस्ट वांट टू चेक वेदर दिस नंबर इज इवन और ऑड। चलो सब जो अभी हमने जिसका फ्लो चार्ट बनाया उसी को ट्राई करते हो। तो आई एम टेकिंग अ नंबर, आई एम जस्ट इनपुटिंग इट, जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंटर ए नंबर। अब क्या प्रॉब्लम होगा कि ये इनपुट जो होगा एज ए स्ट्रिंग होगा, तो उसको हमने नंबर में न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेना है, इंट में। तो आई पुट द होल स्टेटमेंट इनसाइड द int function. Okay, so whatever will come, it will become a integer. मैं रन नहीं कर रहा हूँ, पहले कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग सेपरेटली। सो कंडीशन इज हियर, इफ दिस एन, अगर हमने पिछले क्लास में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, है ना, तो हम लोग उस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। आई होप कि को याद होगा, एक ऑपरेटर था मॉडलो ऑपरेटर, है ना, जो रिमाइंडर देता है। अगर उस दिन अगर वो उसका प्रैक्टिकल छूट गया तो अभी आप देख लो, है ना, एवरीथिंग विल बी यूज्ड बाय एंड बाय। इफ एन मॉडलो 2, अगर एन को मॉडलो करे 2 से और वो हो जाए किसके बराबर, 0 के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन कि अगर एन को मॉडलो करें और उसका मॉडलो क्या देगा, रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर 0 देगा, इसका मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 2। सो इफ एन मॉडलो 2 इक्वल टू 0, तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है इवन, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल एक प्रिंट कर देते हैं। अच्छा मिनट, इवन दैट्स ऑल। चलो अब रन करता हूँ। इंटर अ नंबर, पुटिंग 7, नो, पहले इवन से चेक कर लो, इंटर even. Okay, so what will happen if I not give a even number, I'm giving odd, it is not printing anything because condition क्या हो गया, फेल हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तब क्या करना है, फॉल्स के लिए लिखना है, तो कहाँ लिखना है, एल्स में लिखना है। एल्स क्या लगाना है,
कोलोन लगाना है, ठीक है. देन print. You can write a number of statement here. You can call a function here. You can do a lot of thing here. यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं. प्रिंट ये डबल लिख रहा है क्योंकि मेरे जुपिटर नोटबुक में एक एक्सटेंशन है जो ऑटो कंप्लीट करता है, वो समटाइम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. ठीक है. प्रिंट ऑड. ओके. सो यू सी द सिंटेक्स हियर. कोई सेमीकोलन नहीं लगाते यहाँ पर. इसको पूरे ब्रैकेट में पूरा उसको क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती है ना. सो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट है. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स नहीं है. अगर आप यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के इसको सारे को क्लोज कर देंगे, just check whether it will work or not. So I'm running this code again. What happened? Okay, it is busy. Something going on. ऐसा हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पर तो कर्नेल को हम इंटरप्ट कर देंगे. प्रोग्राम रुक गया and they will be start कर लेंगे. Okay, do it again. Enter a number. I'm putting say 9 this time. Putting enter. कुछ 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 क्या हो गया इसमें. It is not behaving like that. अच्छा. I'm putting a number. It is not working like that. जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे काम नहीं कर रहा है. तो सिंपली वैसा था जैसे पहले वैसा लिख देता हूँ, है ना. If and model 2 equal to 0. एक बार ध्यान देना है, इंडेंट अगर प्रॉब्लम अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, योर कोड विल नॉट वर्क. ओके. सो आई एम रनिंग इट अगेन. ओके. आई हैव टू इंटरप्ट रीस्टार्ट द कर्नल. हर एडिटर का अपना कुछ प्लस माइनस पॉइंट होता है. अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा, आई हैव अनदर एडिटर, आई विल बी वर्किंग ऑन दैट, है ना. ओके. सो आई एम जस्ट गिविंग इट 4. आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट. इट इज नॉट वर्किंग नाउ. अब इसने काम करना बंद कर दिया. अनमैच दिस. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम. क्या हो रहा है कि एक ब्रैकेट था और एक ब्रैकेट रह गया. ओके. नाउ आई एम हैप्पी दैट समथिंग is going on. Yes. So you got a bug here. Now put it again. Okay. So it is not working. Why it is not working? No problem. I will just cut it and write the program here. Okay. First I will check. I will print n, check whether number has come. Yes. Okay. I will write if again. If this n modulo 2 equal to 0, then we have to print a problem with editor. No, nothing to worry about. Programming is the work of a lot of patience. Print even, and then you have to put matching else. So else else print what. So it's even. Okay. So that is what is the if and use of if and use of else. Anyone has any question? Yeah, little bit of put bracket for an कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की, उसी को जरूरत नहीं होती है. हाँ, पे ब्रैकेट यहाँ पर लगाना था, है ना. ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ कोडिंग थोड़ा बहुत जो है
मिस्टेक होता है, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है, बिकॉज आई हैव कीपिंग माई आईज ऑन सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, है ना, ठीक है। सो बट यस, पाइथन में ये जो ब्रैकेट्स वाला जो रूल होता है, ब्रेसेस जो लगाते हैं, वो उतना नहीं होता है, ठीक है, जैसा सी में होता है कि इफ मिस ब्रैकेट्स और एनी टाइप ऑफ ब्रेसेस देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल, दैट इज नॉट हियर। अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर तो भी शायद काम कर जाए, मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसे लगा के देखें, तो लगा के देखते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट पुट द मिस द नंबर, ओके, फिर से रन करना पड़ेगा। ये होता है यहाँ पर, है ना, ये प्रॉब्लम जो होता है ये जुपिटर का है ना, आई हैव टू रिस्टार्ट इन दैट केस, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो मेमोरी है पीछे उसमें कुछ गार्बेज चला गया, है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, ये हो जाता है यहाँ पर कि अगर आपने इसको इनपुट दिए हो ना के बिना आपने पास कर दिया तो इसके इन्वायरमेंट में कुछ गार्बेज चली गई, है ना, और दैट इज गोइंग ऑन, सो दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, ओके, नाउ इट इज वर्किंग। चलिए, तो इफ एल्स का मतलब आ गया कि इफ कहाँ लगाते हैं, एल्स कैसे लगाते हैं। अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट इफ एल्स जो है वो क्लियर हो जाए। सो और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम भी बनाते हैं कि इफ एल्स आप क्या कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट इज कॉल्ड द नेस्टिंग। एक और कीवर्ड था वहां पर, वो था एलिफ, एलिफ का भी यूज होगा। सो मेक अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम। I have say marks of three subjects. I just want to calculate the percentage and find out the grade कि ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या, 60% इक्वल या अबव होगा तो ग्रेड फर्स्ट होगा, 60 to 45 होगा तो सेकंड होगा, 45 to 30 होगा तो थर्ड होगा, and below that fail होगा. So I just want to do things. Thing is here that on the basis of conditions there will be multiple condition. एक कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, अगर यस हो रहा है तो फिर दूसरे कंडीशन को चेक कर रहे हैं, नो हो रहा है तो फिर और कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसके यस नो पर फिर और कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड nesting. Nesting, one under, yeah, somebody has raised hand. Voice problem, just wait, just check. Is my voice better now? Is my voice better now? Yeah, thanks. So what we're talking about, the terminology, terms that is used called the nesting. Okay, what is nesting in looping and loops in programming? Nesting is a condition within condition. Okay, so if के अंदर if आ रही है या किसी लूप का यूज करेंगे अभी लेटर ऑन, फॉर के अंदर दूसरा फॉर आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड द नेस्टिंग, ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर कुछ नेस्टिंग की जरूरत होगी। say I have three subjects, say physics p is equal to, I am inputting number int. Why I am doing int, okay, inside it input, put just enter marks of physics, okay, do a lot of copy paste, or I'm just changing this to chemistry and changing this to math, okay, PCM, CHE, oh, okay, C, math.
Okay, so this will input some number. First, I want to write code. So I'm adding everything I'm writing in a separate cell just for the sake of clarity. So this cell, we have done some input. And next cell, I will have a variable. Yeah, one more thing I just forgot. The variable name should be clear. It should be unambiguous and it should not conflict with any keyword. Okay, so anything that is just like a if is a keyword, you can't uh, name your variable as if or else or any operators there. Okay, and also with the name, okay, we will go further, but it should be very, very clear that my variable name I'm taking at total number. Okay, yeah, total marks. Is it a clear? It is a good name of variable. This name variable is okay. Why not? If no, why not? Space not allowed. Fine. So another, I'm giving the name of my variable as cost plus profit. Okay, is it allowed? Cost plus profit, is it allowed? No. Why it is not allowed? Because I will give you another mantra of rule. Okay, uh, in a different way. Operator not allowed, only alphanumeric need out. A lot of rules are there. Space and special characters like asterisk, dollar, and all those things which are the char set of that particular language is not allowed. So my rule is why not allowed? Because we don't want confusion and though we don't want conflict. The rule is no confusion, no conflict. So in here, it is a confusion. Whether it is one variable or second variable, it will go into this or that. So here is a confusion. Okay. Here is also a confusion. What is confusion? Whether it is a variable name or an operation. नाम है या काम है. हाँ. So यहाँ पर क्या है? Confusion है. और अपने वेरिएबल का नाम हमने रख लिया से else. So यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? कन्फ्लिक्ट है. ठीक है. सो कीवर्ड्स के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और ऑपरेशन के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दैट इज द रूल. हाँ, जितने भी रूल है उसकी समरी है. नो कंफ्यूजन, नो कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो लेट मी कंटिन्यू. So I'm keeping a name TOT. One more thing about the variable naming here. And some of the language name is written something like that. Total say MARKS. Is it okay? Total or total marks is okay here in Python. Okay, and I'm putting it another way. Total, I'm using small. Okay, and another way I'm writing is like a total MARKS, total marks. Is it okay? Yeah. So these are the two way of writing variable name. So first call is called snake. It is called the snake. Total marks of TA and obtained. Just like, and sometimes like total marks of TAINAD. Okay, so this is called the camel casing. Humps like camel, and this is called the snake way. Okay, so in Python you can use both, but there are certain convention, not rule, convention. In Python, this way is used. If you write like that, it is not wrong, but the convention is use this snake way. Okay,
in C++ and Java, you may be using like this camel casing. Okay, fine. Is it clear to everybody? Okay, fine. So I'm just keeping a very small TOT is equal to P plus, that is why the name of the P plus C plus M is also not very good, because it should be understandable what you are. So giving the name of PHY, CHE would be better. So we have calculated, now we are calculating percentage. I'm keeping the name PER, sorry, here PER. PER. It is giving some suggestion, just ignore it. PER is equal to TOT divided by 3. Very simple. Suppose all the percentage are of, I have missed something, physics, no, it's okay, PCM, yes, okay, fine. So we have done 2 operation, we have added number, we have just check whether till now everything is okay or not. Okay, just print everything. I just want to check TOT, print both the things. Okay, print total is equal to, while we are doing one code, we are adding फिजिक्स का मार्क्स परसेंट में आएंगे, इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स हमने डाल दिया, अज्यूम कर रहा हूँ 100 है, तो किसी ने 89 डाल दिया तो 89% है. ओके, सो डोंट पुट परसेंटेज और एनीथिंग हियर, अदरवाइज वो न्यूमेरिक नहीं रहेगा, है ना. वी विल चेक एवरीथिंग, है ना, हर चीज को चेक करते चलते हैं. सो टोटल इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू टीओटी, और देखिए एक से ज्यादा वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं, है ना. PPER है, ये आ गया अपने से, बढ़ गया है ना. मैं बोला ना कि इसका ऑटो कंप्लीट जो है ना कुछ चीज़ों को ज़्यादा कर देता है. सो यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. टोटल और क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज. PER, ये अपने से कर देता है कुछ कुछ, है ना, सो उस पर ध्यान देना है. PER इजिकल टू को हमें अगर लगाना है तो इसके अंदर लगाना होगा, और सेपरेट करते हैं कॉमा से, है ना, कॉमा से सेपरेट करते जाते हैं. सो टोटल कॉमा, अब ये वेरिएबल है, हाँ, विदाउट कोट, देन ये स्ट्रिंग है, हाँ, कुछ फिक्स्ड है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, PER को करना है प्रिंट. ठीक है, पहले अब रन करेंगे, जस्ट ट्राई, कुछ एरर होगा तो देखेंगे. फिजिक्स में हमने डाल दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, तीनों में सेम वैल्यू डाल रहा हूँ. ठीक है, 70 70 70. ठीक है, ओके, यहाँ तक सब ठीक है. नाउ द आवर रियल वर्क, अब ये असली काम पर आते हैं. क्या है, इफ ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है तो लगाते हैं, अगर आप लगाओ तो अच्छी बात है, मैं लगा देता हूँ. इफ PR greater than equal to 60, okay, that in that case we have to print first division. That will be enough. Okay, otherwise, now the problem is otherwise. So otherwise is else. Now the question is here, if it is more than equal to 60%, then okay. Then otherwise, second, sure, no. It may be second, it may be third, it may be fail. Okay, so again in else, you have to do some checking. Okay, if PER greater than equal to 45. I'm just telling you why I'm just not writing less than 60, greater than 45. Why both are not I'm writing, because it is coming after filtering. ये test हो चुका है. Then greater than equal to
45 नहीं है, हाँ, दैट इज वाई हमें ग्रेटर देन 45 लेस देन 60 दोनों लिखने की जरूरत नहीं है ना. Someone is suggesting me Alif. I'm coming to Alif. I will show why Alif is needed. Okay. What is the advantage of else over Alif, or Alif over else? The difference I will be talking about. Right. So in that case, a colon is needed. So just print second. Okay. Now, if it is first, not second, otherwise third, it could be third, it could be fail also. So again, if it is false, then you have to give the else. ये else किसका है? ये else इस for if का है ना. So we are we sometime nesting कैसे हो जाता है? Sometime nesting दो तरह से होता है. एक होता है इस तरह से, ladder type का, और एक होता है one inside another inside another. I will show you some example for that. Okay. तो दो तरह के सिचुएशन आते हैं कॉम्प्लेक्स में, दो एक्सट्रीम, या तो लैडर टाइप का आता है, या नहीं तो इफ के अंदर इफ, और एल्स के अंदर एल्स के अंदर एल्स, एक पूरा इफ एल्स के अंदर पूरा एक एफ एल्स आ जाता है. ऐसा भी एक स्ट्रक्चर बनता है. और ठीक है, और ये नहीं तो एल्स इफ एल्स जो अब हमारा बन रहा है वो लैडर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. समटाइम वी गेट द मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके, सो दैट इज द सिचुएशन हियर. इट इज गेटिंग समथिंग लैडर लाइक. ये एल्स में क्या करना है बताओ? अब इस एल्स में क्या करना है? प्रिंट करना है थर्ड, या फिर चेक करना है? व्हाट टू डू? you have to check again because it could be third, it could be fail also, है ना. तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा. if PR greater than equal to 30. तो अब देखते हैं. So let's see. In that case, what you to do? Yes, we will be printing. Third division. Now, what will be we will be doing with the else? What will be doing with the else? Further test is needed. Further test is needed? No. Everything is tested. Rest of them are fail. So print fail. Let's check. Run it. First division. Now run it with the first is written as wrong. FRIST. First again. First, second, third, fail. ऐसा करते हैं, we check with some other, because टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग हर सिचुएशन को करेंगे. फर्स्ट के लिए भी करेंगे, सेकंड के लिए भी करेंगे, थर्ड के लिए भी करेंगे, और फेल के लिए करेंगे. तो सबसे पहले जरा फेल के लिए टेस्ट कर लेते हैं, है ना. So put the marks 22. I'm putting same number 22, 22. Run here. Fail. Okay. Enclose everything within a function and call the function every time you new data. Yeah, you're talking about function, but as I said, we are advancing this course step by step. So for the function or def will come later. Okay, everything we will be covering in a sequence. Okay. So now the question is, what will happen if you write like that? There are a lot of problem here. A little bit of indentation here and there will put you in some problem. You have to clean that. You have to be very, very careful about the indents. So that is where this alif will work. Alif is a simpler version of this. Okay. So alif I'm not writing. I'm a bit lazy here. I'm just changing this code. Okay. What I'm doing, I'm just putting some back. Alif हो गया.
that is what I'm doing here also. एलिफ हो गया, और अब हमें ये इंडेंटेशन नहीं चाहिए, ये वाला यहाँ चाहिए। इंडेंटेशन गलत होता है तो समटाइम कलर चेंज हो जाता है ना, सो आईडी विल हेल्प यू। एल्स जो है, जो लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज सेव्ड, ओके। सो इफ एलिफ, एलिफ एलिफ, I hope it is correct. Okay, so I'm running it again. Okay, because the this total and percentage is still in the memory, so I need not take it again. Okay, expected and indented block at what place? Fell. So what happens? You need a indent here. So how much you need? Simply put it there and paste here. Okay, it will take itself. Now it's okay. So you see, this alif is much more clean, isn't it? So that is why alif is used. I hope everybody got it. Why we should prefer alif and where. Fine. Yeah. So we have learned about if, else, and alif. Now we make one more problem here. एक और problem बनाते हैं situation के लिए, कि और क्या कर सकते हैं कोड को और इजी करने के लिए. We will make some. तो एक प्रॉब्लम बनाते हैं. I'm taking say side of three sides of a triangle and check whether a triangle can be made or not. So what is the condition for a triangle to be valid? The sum of this A, I have this side is A, other one is B, another one is C. So sum of this AB should be greater than C, sum of this CB greater than A, sum of this AC greater than B, isn't it? So just we want to create a problem for that. So I'm putting the name of three variables, S1, S2, and S3. Everyone knows how to take the input. So just to save the time, I'm not taking it from the user. I'm just putting the values here. And in previous class, we have learned that how we can take more than one value at a time. कैसे assign कर सकते हैं. So I'm taking 3, 4, 5. One of the 3, 4, 5. Is it okay? S1, S2, S3, 3, 4, 5. Is it okay? Just check. है ना? क्या है? सही है? गलत है? Not defined. Why? Because it has become markdown. It has become let's make it code. Okay. ठीक है. S1, S2, S3. ठीक है. So we can take more than one, we can assign more than one variable at a time. अब इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है. ठीक है. कैसे प्रोग्राम बनाएंगे? If you have to take a lot of decision, 3 decisions. If S1 plus S2, a name just for the sake of simplicity, मैं name वही ABC कर देता हूँ, है ना? ABC, okay. Right? If A plus B greater than C, अगर पहला ट्रू हो तो दूसरा टेस्ट करेंगे, दूसरा ट्रू हो तो तीसरा टेस्ट करेंगे. Again we'll see how some problem can occur and how to be a better code कैसे लिखें. If A plus B is greater than C, कोलोन लगाना है. Then अगर ये ट्रू है तो दूसरा चेक करेंगे. If so, this if is under this, no? If A plus B greater than C, so A plus C greater than B. अगर ये दोनों ट्रू है तो फिर तीसरा टेस्ट करते हैं. If
इफ अब क्या बच गया, बी प्लस सी, बी प्लस सी greater than a. If all is correct, then we will be doing the uh, 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 print valid. Okay, you have to put it inside the code. I think this code is okay. If a plus b is greater than c, पहला correct है, a plus c greater than b, b plus c is greater than a, then we are, what about the else? ठीक है, एक else लगाता हूँ, else print not valid, not valid. Now run this code, valid. थोड़ा चेंज करता हूँ, है ना, इसको 15 बना देता हूँ. नाउ चेक, 4 plus 3 7 is greater than 15 plus 4 is greater than 3 and is okay. Triangle बनेगा. 15 plus 3 is more than 4. 4 plus 3 7 is greater than 15. ठीक है ना, बनेगा ना, वैलिड. कोई इनवैलिड नंबर बोलिए जिसमें ट्रायंगल नहीं बने. एनीवन सजेस्ट, क्या वैल्यू दे दूं? ठीक है, ये वैलिड नहीं हो रहा है ना. 22 is greater than 5, 25 is greater than 2 plus 5 plus 2 7 is not. अब क्या हुआ, आउटपुट नहीं आया. ठीक है, आउटपुट नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस एल्स वाज ओनली फॉर दिस इफ. और यहाँ कहाँ फेल हो गया? ए प्लस बी, ए प्लस बी दैट इज 20 प्लस इज ग्रेटर देन, ये ट्रू था. ए प्लस सी, ए प्लस सी, यहां पर एरर हो गया. हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, 3 मिनट्स के अंदर क्लोज होगा. या ओके, देयर वाज अ कॉन. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? ये इफ फेल कर गया, इसके लिए हमने एज एल्स नहीं लगाया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पुट अ एल्स फॉर दिस आल्सो. गॉट इट? क्या लिखना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनवैलिड. एक यहां पर एक और एल्स लगाना होगा. ठीक है, वेयर? हियर. ठीक है, दिस एल्स इज फॉर दिस इफ, दिस एल्स फॉर दिस इफ एंड दिस एल्स फॉर दिस इफ. ये तीनों में क्या प्रिंट करना होगा? नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड. ओके, गॉट? इज इट क्लियर? ठीक है, हो गया ना. सो व्हाट वी हैव सीन, दिस इज द सिचुएशन. ये ऐसा वाला सिचुएशन जनरेट हुआ है ना, where one if else is inside another if else is inside another if else. Okay, so I hope that everyone get a fair idea of if else and elif. Okay, fine. Yeah, so we will continue the things because the time is getting over. Next class, be on time. We will be continuing from here, and the surprise program that I have shown in the beginning, I will go for that program again. फिर दूसरा और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दिखाऊंगा. लेकिन आज ये if else I hope सबने समझ लिया होगा. Okay, so we are winding the class. Yeah, ठीक है. So thanks for joining. See you in the next class, everybody.
Thank you, sir. Thank you all.